देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो 220 गीगावाट है उसमें जो दो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो है सोलर जो कि 100 गीगावाट प्लस है और विंड है 48 गीगावाट पर। सोलर की कैपेसिटी 34 टाइम्स एक्सप्लोर हुई है पिछले 10 सालों में फ्रॉम 2.8 गीगावाट टू 100 गीगावाट। जो सोलर 100 गीगावाट पर फिलहाल 10 साल पहले कहा था सिर्फ 2.6 गीगावाट पर, यानी 34 टाइम्स से बढ़ा है। 34 टाइम्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी में कोई चीज है तो वो है सोलर। अगर विंड की बात करें तो विंड वाज इन अ बेटर पोजीशन कंपेयर टू सोलर 10 ईयर पहले। 10 साल पहले विंड था 23 गीगावाट पर जो अभी 48 50 गीगावाट पर आ चुका है, यानी कि 10 साल में हार्डली ये दुगना हो चुका है। वहीं पर सोलर कितना हुआ 34 टाइम्स। जहां पर सोलर एनर्जी पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सालाना 43% से बढ़ी है, वहीं पर विंड एनर्जी बढ़ी है मात्र 7% से। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हम विंड को तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे, तो उसका एक Whew. बहुत आपको बता रहा हूं जिससे पूरी विंड एनर्जी का मार्केट Woohoo. देखिए इंडिया में आउट ऑफ इंडिया 28 स्टेट्स सिर्फ 9 स्टेट ऐसे हैं जो विंड के लिए What is up? What is up? Exactly on time. I just came back from football training. Okay, that's nice. So, let's check your training videos. Let's check your training videos. Okay. Here it is. Wait, what stadiums have you been to? Anfield? Yeah, I thought so. PSG? The Wizards? Wait, what stadium? हाईली फेवरेबल है। तो यहाँ पे लाल रंग में जो आपको दिखा है वो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो विंड एनर्जी के लिए बहुत फेवरेबल है। फिर 5 से 7 ऐसे स्टेट्स इंडिया में हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो जहाँ पर मॉडरेट और लोकलाइज पोटेंशियल है। और फिर 13 स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में दिल्ली, गोवा, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो दे आर नॉट फेवरेबल ड्यू टू लो विंड स्पीड, कॉम्प्लेक्स टेरेन और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि विंड एनर्जी इंडिया में क्यों नहीं बढ़ पा रही। बाकी और कोई चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। और उससे भी बेटर मैं आपको नॉलेज देता हूँ विंड एनर्जी का। विंड पावर डेंसिटी की क्लासेस, ये इसकी 7 क्लासेस है टोटल, यानी अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 में आता है, यानी कि वो विंड एनर्जी फ्रेंडली नहीं है। तो वहां पर कितनी भी ताकत लगाओगे तो आने वाले कुछ सालों में तो ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ अलग टेक्नोलॉजी आ गई तो ठीक, लेकिन राइट नाउ वो कुछ काम नहीं। और इसीलिए विंड एनर्जी का 98% जनरेशन सिर्फ 3 स्टेट्स में हो रहा है। बताओ कौन से? कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। अब यहीं पर यूएस का देखिए तो यूएस के 20 टू 25 स्टेट्स ऐसे हैं जो विंड एनर्जी के लिए फेवरेबल है। चाइना में भी काफी सारे एरिया विंड एनर्जी के लिए फेवरेबल है। और इसीलिए फर्क आप देख सकते हो, इंडिया जहां पर 50 गीगावाट पर है विंड में, वहां पर यूएस 150 पर है और चाइना 350 पर है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप ये ब्लू और येलो एरिया देखेंगे तो ये क्लास 1 और क्लास 2 आ रहे हैं। अभी जो क्लास 1 है 0 Oh, really? Can you see now? What's going on? Wait, what stadiums have you been to? Hey, hi. Anfield? Yeah, I thought so. PSG? The Wizards? Wait, what stadiums have you been to? I couldn't even see my keyboard. Okay, I'm showing you again. 32. Hi, Samir. Hi. 32 watching. Wow, that's amazing. Amazing. Grind, that subscribe button isn't clicked. This is not my account. Okay, this is some different account. I will have to give you subscribe with very secret account. Okay, so give me some time. And I shouldn't be so predictable, that okay, this person can be grind. So no, it is going to be a secret. I'll subscribe, but I'll be your secret subscriber very soon, in this month only. To all the people who said hi, where are you now? You just came to say hi? Hello, SK. Hi. What is up? What is up? I'm having pizza soon, so I will have to go in a bit. Oh, nice. Enjoy your pizza.
nobody will stay. Why? Why kill? Why? Why nobody will stay? Is it becoming too dark today? Wait. जो ब्लू कलर में देख सकते हो लाइट ब्लू में मेजॉरिटी इंडिया उसी में आ रहा है 50% से ज्यादा और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ काम का नहीं है विंड एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर येलो वाला भी जो है वो भी उतना काम का नहीं है उसमें भी आप देख सकते हो फिर पहले क्लास 1 क्लास 2 पकड़े तो उसमें मेजॉरिटी इंडिया आ जाती है सेकंड वाला थोड़ा बहुत काम का है थर्ड वाला जो है क्लास 3 वहां पर सुजलॉन क्लेम करता है कि उन्होंने S144 सीरीज टरबाइन बिल्ड किया है जो लो विंड साइड्स यानी क्लास 3 के लिए फेवरेबल 1 और 2 उसमें नहीं आता तो इनके S144 पर मैं आता हूं टरबाइन पर जिसकी अब बात हो रही है और आपको बता दूं कि यही एक चीज है जहां से 91% सुजलॉन का रेवेन्यू आ रहा है तो इस टरबाइन को समझना भी जरूरी है लेकिन उससे पहले मैं आपको कंपनी की कुछ फाइनेंशियल चीजें बताता हूं रिसेंटली ये बताया गया कि न्यूज़ में सभी जगह एक ही आया कि अचानक से सुजलॉन का प्रॉफिट बढ़ा है 5 गुना और क्वार्टर 4 का प्रॉफिट उनका चला गया है 1181 करोड़ पर इसी पीरियड में उन्होंने रिकॉर्ड 1.55 गीगावाट की डिलीवरी की है जो कि 118% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है कैपेसिटी उनकी बढ़कर हो गई है 4.5 गीगावाट विद एडिशनल 10 न्यू प्रोडक्शन लाइन सुजलॉन S144 इनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है एंड इनके पास एक काफी बड़ी ऑर्डर लाइन तो कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो विंड एनर्जी है वो 100 गीगावाट कैपेसिटी पर चल जाएगी बाय 2030 यानी अगले 5 साल में डबल हो जाएगी यानी कंपाउंड साल में 14-15% से बढ़ेगी लेकिन पिछले 10 साल की बात करें तो 7% से ही बढ़ी और वो कम स्पीड से क्यों बढ़ी है आपको पता है तो आने वाले सालों में भी सोलर के कंपैरेटिवली ये काफी कम स्पीड से ग्रो करेगी क्यों आपको रीजन पता है तो अभी प्रॉफिट की बात करते हैं कि जो रियल है कि नहीं तो 1182 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बताया बट इसमें से 630 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो डिफर्ड टैक्स गेन आप अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट नंबर 7 देखते तो ये चीज आपको पता चलती लेकिन किसी भी मीडिया हाउस ने इसके बारे में बात नहीं की तो लोगों ने यही अज्यूम किया अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और फिर शेयर प्राइस अचानक से बहुत ऊपर गई तो विदाउट डिफर्ड टैक्स गेन अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो वो आता है 551 करोड़ का और रियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो 42% की है और लास्ट ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो है 116% यानी ग्रोथ फिर भी अगर डिफर्ड टैक्स को भी हटा दो तो ग्रोथ अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं जितनी एक्चुअली डायरेक्टली दिखाई जा रही है अगर डिफर्ड टैक्स को हटा दे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट चेंज हो रहा है तो इसके लिए कंपनी का पी रेशियो भी चेंज होगा जितना भी दिख रहा है उतना नहीं है वो चेंज होगा बता दूं मैं आपको अब बात करते हैं कंपनी की फ्लैगशिप प्रोडक्ट यानी कि S144 देखिए इसका लार्ज रोटर डायमीटर है 144 मीटर का जिससे ये ज्यादा एनर्जी कैप्चर करता है सुटेड फॉर इंडियाज विंड क्लास 3 साइट्स ये इसके प्रीवियस मॉडल के कंपैरेटिवली 20 to 25% मोर एनर्जी जनरेट करता है इजी टू ट्रांसपोर्ट है और बल्क ऑफ सीजन ऑर्डर ये ज्यादा अब बल्क ऑफ ऑर्डर आ रही है तो कितनी आ रही है समझना जरूरी है टोटल ऑर्डर बुक इनकी फिलहाल है 5.5 गीगावाट की बिगेस्ट ऑर्डर कहां से मिला है तो भाई वो मिला है एनटीपीसी से 1.5 गीगावाट का ऑर्डर्स आर मोस्टली फ्रॉम गुजरात कर्नाटक एंड तमिलनाडु क्योंकि वहीं पर एक्चुअल में विंड का काम हो रहा है वहीं से एक्चुअली विंड एनर्जी जनरेट हो पा रही है और एक दो ऑर्डर इनके एमपी से है कुछ राजस्थान के बाड़मेर से यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स कहां से हैं तो रेड एरिया से अभी जो S144 है ये ऑर्डर बुक में 91% कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये ऐसा बिजनेस है टरबाइन का जहां पर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी बन पा रही है इसलिए पिछले कुछ 3-4 साल में देखेंगे जैसे कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ एक्चुअली तब से लेके तो कंपनी एस इन टरबाइन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इनमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी और क्योंकि सीरीज में लगातार कुछ ना कुछ नया नया कर रहे हैं तो मार्केट में डिमांड भी है देखते हैं अगले वर्जन में क्या कुछ लाते हैं जिससे कंपनी को एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ मिल सके अब आते हैं वापस कंपनी की उस कहानी पर कर्जे वाली कहानी पर और कंपनी ने अपना जो सस्टेनेबल डेट है 5,200 करोड़ उसमें से काफी सारा पार्ट ऑलरेडी पे किया है तो अभी सस्टेनेबल डेट का बहुत कम है अनसस्टेनेबल डेट जो है 8,600 करोड़ का तो बाय 2040 इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में रिसेंट टाइम में शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है तो उसके चलते क्या ये कंपनी की शेयर प्राइस सस्टेनेबल है जानना बहुत जरूरी है देखिए कंपनी का प्रॉफिट फिलहाल 2000 करोड़ के करीब है और कंपनी का पी रेशियो निकल रहा है वो निकल रहा है 47 का लेकिन अगर हम ये डिफर्ड टैक्स गेन को हटा दें तो उससे बहुत फर्क आ रहा है डिफर्ड टैक्स गेन को हटा दे तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है वो कम होकर आ रहा है 1441 करोड़ पर जिससे कंपनी का पी रेशियो 47 से शूट अप होकर सीधा जा रहा है 68 पर जैसे कि दिखने में तो ये 47 लेकिन एक्चुअल में कितना है 68 तो ये भी चीज आपको शेयर खरीदते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए बीच में जोमेटो के केस में भी हुआ कि उनका ऐसी एक अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से अचानक प्रॉफिट बढ़ गया था लोग लगा रहे तो बहुत बढ़िया है तो ऐसे टाइम में जब भी अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है तो आपको उसके हिसाब से ही पी रेशियो निकालना है जो लिखा है उसे ही अज्यूम नहीं करना है तो कंक्लूजन में मेरा जो व्यू है उसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं पहला तो ये कि इंडस्ट्री जो है कंपैरेटिवली अगर मैं सोलर कंपनी देखूं तो वो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कंपेयर टू विंड एनर्जी क्योंकि वहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से होगी आप समझ सकते हो पिछले 10 साल में 34 टाइम्स को बढ़ा है और आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो विंड नहीं पूरा कर सकती ये भी चीज आप समझ लीजिए 500 गीगावाट जाना है 2030 तक और उसके बाद भी इनको मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ ही जाना है वही फ्यूचर है तो वहां पे जाना है तो विंड कांट डू दैट वो करना है तो सोलर को ही करना है और सोलर में मुझे एक बेटर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है कंपेयर टू विंड नंबर 2 सोलर को ना इंडिया की ज्योग्राफी सपोर्ट करती है लगभग हर जगह पर अच्छी खासी धूप रहती है और कोई भी जगह पर सोलर लगा सकते हो विंड में फिलहाल ऐसा नहीं है ये आने वाले में कितनी टाइम लगेगा कितनी टेक्नोलॉजी लगेगी आई डोंट नो एंड वो थोड़ा टफ ही प्रोसेस है काफी कंपेयर टू सोलर सोलर इज इजी टू इंस्टॉल और बहुत सारे बेनिफिट भी है तो मेजरली इंडिया में जैसे मैंने देखा आप प्रॉपर विंड से इलेक्ट्रिक जनरेशन नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको डिपेंड रहना है सोलर की तो अगेन सोलर की ग्रोथ के लिए एक और ऑप्शन मिलती है आपको और जब तक और नई टेक्नोलॉजी नहीं आती तब तक तो क्लास 1 क्लास 2 है जिसमें 70-75% इंडिया आता है तो उसको कवर करना तो न्यू टेक्नोलॉजी के अलावा काफी मुश्किल है और वैल्यूएशन की बात करें तो जितना दिख रहा है उतना नहीं उससे ज्यादा है तो कंपनी की ग्रोथ को देखें 3 सालों से कंपनी काफी अच्छा कर रही है तो 3 सालों की ग्रोथ ले लूं तो रेवेन्यू ग्रोथ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 18% और प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टरबाइन है कि प्रॉफिट में इसमें अच्छी मार्जिन है तो कुछ टाइम में ये बहुत बढ़ेगा प्रॉफिट लेकिन एक टाइम आके वो रेवेन्यू की स्पीड से ही बढ़ेगा
तो रेवेन्यू लगभग पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सीरीज या 30% है, पिछले 3 सालों में 18% है। जिस हिसाब से रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है उस हिसाब से पी रेशो मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और उसके साथ-साथ कंपनी तो कह रही है कि हमारा S144 जो है वो क्लास 3 एरियाज़ के लिए बना है, वहाँ पर स्टेशन है वो, लेकिन ज़्यादातर ऑर्डर्स क्लास 4 एरिया से आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर सुज़लॉन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है तो क्लास 3 एरियाज़ के ऑर्डर्स होने लगेंगे। अगर आप सुज़लॉन में इन्वेस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्लास 3 एरिया से सारे क्लास मैंने बता दी, चाहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके उस पर्टिकुलर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी समझ में आए। और जो ग्राफ इंडिया का आपने बताया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो मेन 3 स्टेट्स है उससे बाहर अगर बहुत बड़ा बिजनेस आए तो सुज़लॉन की ग्रोथ के चांसेस है। अदरवाइज इसी तरह की मतलब 20-25% की ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको दिख सकती है। तो डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, प्रॉपर ये सारी चीजें चेक करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो मेरा मानना रहेगा वेट एंड वॉच। तो क्लास 3 के ऑर्डर पर जरूर ध्यान रखें। तो फिलहाल रुकते हैं, नेक्स्ट चीज कंपनी एनालिसिस आपको नीचे कमेंट करके बताइए, जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स उसको उठाएंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ऑनर भी आया था तो सचिन बस कर भाई कब ठीक करेंगे कैसे ठीक करेंगे टीम को पता ही नहीं कुछ। और ये कमेंट करके कौन आया था गैर पे लोन करना चाहिए था। जय दोस्तों क्या हाल है। न्यू फोन एसर ने पहले स्मार्टफोन लॉन्च किया, पुरानी बातें जान लेते हैं। अब फिर ये नया एकदम एसर की तरफ से फोन है। एक्चुअली एसर का है लेकिन एसर का नहीं है, बताता हूं मैं। ये लॉन्च पहले होने वाले थे, फिर डिले किया गया, फिर जिस दिन लॉन्च होने वाले थे वो डिले किया गया, फिर 2 मॉडल आने वाले थे, फिर एक आया है। इस फोन का नाम वैसे एसर सुपर जेड एक्स। ये बजट फोन है, बजट 5G फोन, अंडर 10,000 से नीचे स्टार्ट होगा, जहां पे हमें डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, वो भी फुल एचडी प्लस पंच होल के साथ, 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, ये सारा कुछ 10 नीचे। तो देखा जाए तो प्राइसिंग अच्छी रखी है। अब सवाल आते हैं कई सारे मन में, पहला कैसा है फोन वो बताऊंगा, दूसरा फोन जैसा भी है सर्विस सेंटर का क्या हाल है, क्योंकि अभी आए तो पता तो लगना चाहिए, तो वो भी मैंने कोशिश किया पता करने का। तीसरा ये फोन मिलेगा अमेज़न पे, तो एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। खैर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये रहा सबसे पहले स्मार्टफोन है। वैसे बॉक्स में सब कुछ है, आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है, उसी के साथ ये जो टाइप सी टू टाइप सी केबल दे रहे लोग, इसे में नॉर्मली नहीं मिलता टाइप सी टू सी, ए टू सी वाले आते हैं ना। और ये केबल भी क्रेडिट केबल है, थोड़ा लॉन्ग लाइफ हो सकता है, तो ये थोड़ा अलग है। साथ में चार्जर भी है बॉक्स में, जो कि 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, टाइप सी वाला है, क्योंकि केबल भी टाइप सी वाला मिला हुआ है। और ये रहा हमारे पास कॉस्मिक ग्रीन, और अच्छा लग रहा है अगर आप देखेंगे मैट फिनिश वगैरह के साथ। ये शुरू होगा 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, फिनिश वगैरह अच्छा दे रखा है। हाँ, एक जो सिम स्लॉट है ना, वहां पे आप देखोगे फ्रेम थोड़ा सा क्रैक हो रखा है, और ये मैंने नहीं किया, ये बॉक्स से बाहर आया तभी से था। इसका मतलब ये है कि जब इसकी पैकेजिंग की गई, ऐसी बात है सारे फोन जितने आएंगे क्रैक नहीं होंगे, लेकिन Hi, what's up? बिहारी, हेलो हेलो, कहाँ से हो भाई? मैं यूके से, ओरिजिनल वाला, यूनाइटेड किंगडम। नहीं दिया गया। क्या हम फोन की बात करते हैं तो जैसे मेरा फोन का मैट फिनिश है, दिखने में सही लग रहा है। हालांकि जो डिजाइन है इसको आप एकदम यूनिक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा फोन उत्तराखंड, ऑनर ने भी लॉन्च किया हुआ। अरे यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप कहाँ से हो? और भी कुछ फोन देखने को मिल जाएंगे। और जैसी बात है यहाँ पे इस नॉर्मली आपको प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट बैक और फ्रेम मिलेगा। ऊपर सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है। स्पीकर लाउड है डेफिनेटली, वो बेस वगैरह उतना फील नहीं होता। क्लैरिटी भी थोड़ा सा बजट के हिसाब से ठीक लगेगा, ऐसे ज्यादा ढूंढेंगे महाराष्ट्र, हाँ हाँ, फाइव सिम स्लॉट है, 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड, 3 नाइस। मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। आजकल बजट फोन में मिलती है, मोस्टली देते हैं रेट में, इसमें भी है। और एफएम रेडियो का कसकाय। राइट साइड यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है, 200 ग्राम का वेट है। और हमने कनेक्टिविटी चेक किया तो एक चीज मुझे दिखा, इसके अंदर 5G है, UNR है, लेकिन 4G तो है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन नहीं दिया हुआ है। वाईफाई आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा। साइड डिटेल आपके सामने। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले यहाँ पर IPS डिस्प्ले है 6.78 इंच की। आपको जो बेजल्स वगैरह अगर आप देखेंगे नीचे थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जो कि इस रेट में ब्रांड देते हैं, लेकिन कंट्रोल दे रखा। अच्छी बात ये लगेगी कि 120 हर्ट्ज की फुल एचडी प्लस है। ये डिस्प्ले को मैंने टेस्ट किया, वीडियो प्लेबैक करके देखा, ब्राइटनेस आउटडोर में जाके देखा। तो अगर मैं इन शॉर्ट सिंपली समझाऊं, ये डिस्प्ले को हम लोग वही 8000 9000 10000 इस तरह से एडजस्ट करें तो ठीक लगेगा, क्योंकि 10000 से ऊपर जो इसका हाईयर वेरिएंट आता है, डेफिनेटली हमें 10,000 से ऊपर और बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है। ऐसे ब्राइट है, सनलाइट में विजिबल भी है, प्राइस के हिसाब से सही है। कलर्स भी आपको ठीक लगेंगे, लेकिन कलर्स ऐसे कोई बहुत ज्यादा ओवर शार्पनेस वगैरह नहीं है वीडियो देखते टाइम। कलर्स पॉप करके आते हैं यूके में आईटी जॉब। सही गेस किए हो, सही गेस किए हो। What about you? थोड़ा सा शेडो पार्ट डल हो जाता है, जहां जहां कम लाइट होती है वहां ज्यादा डार्क दिखाता है। और हाँ, मैक्सिमम आप YouTube पे 2K वीडियो प्ले कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज HDR वगैरह प्लेबैक नहीं मिलेगा, जो कि रेट में नॉर्मली मिलता नहीं किसी फोन में। एंड परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर इन्होंने जो चिपसेट सेलेक्ट किया है, प्राइस के हिसाब से सही सेलेक्ट किया। डायमेंसिटी 6300 UFS 2.2 के साथ आता है, LPDDR 4X RAM। अंतुतु को देख के मैंने 4 लाख के आसपास आता है, डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसा लोअर साइड प्रोसेसर नहीं है, हाईयर साइड भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सही है। गेमिंग वगैरह भी आप ठीक ठाक लाइक कैजुअल गेमिंग जैसे फोन कराते हैं 10,000 तक वो करा सकता है। अब इसी के साथ आपके मन में आएगा सॉफ्टवेयर का क्या हाल है, कैसा वैसे फोन चलाने में कैसा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए आपको लेटेस्ट Android 15 दिया इन्होंने। सॉफ्टवेयर अपडेट कितना मिलेगा ऐसा कोई डिटेल नहीं बताया, ना बताया गया, वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है। और वेबसाइट पे तो बड़ी अधूरी सी चीजें हैं, थोड़ी सी मेन हाईलाइट ये देखो आप, इन्होंने दे दिया सारा, लेकिन जैसे स्पेसिफिकेशन पार्ट होता है, ब्रांड क्या करते हैं हाईलाइट अलग देते हैं, तो साइड में स्पेक्स पार्ट होता है वो मिसिंग है, जिसमें छोटी छोटी चीजें मेंशन होती है। तो वेबसाइट की प्रेजेंटेशन और बेटर करने की जरूरत है। और अगर आपको मन में आ रहा है कि ये स्टॉक एंड्रॉइड है कैसा है, एक्चुअली स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है ये, लेकिन एक कस्टम यूआई है। एक्स्ट्रा ब्लॉकवेयर तो बहुत ज्यादा नहीं है, इनका अपना फोन मैनेजर है, थीम्स है और ये गेम स्पेस है, लेकिन अनवांटेड जो बहुत सारे आते हैं ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। और एक्चुअल में सेटिंग में इसमें अबाउट फोन चेक करते हैं ना, बड़ी तरह ये सब ऑफिशियल
सॉरी 2 तो इस तरीके से वर्जन देंगे इन फ्यूचर अगर फोन आते हैं। एक्स्ट्रा फीचर पहली बार भाई आप जानना चाहोगे क्या क्या एक्स्ट्रा दिया ये देख सकते हो आप। स्पेशल फीचर्स में ऐप लॉक का फीचर है, साइड एप्लीकेशन बाहर इस तरीके से मिल जाएगा, ऐप लोड नहीं कर सकते हैं, वन हैंड मोड है, इनफैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग ये डिफरेंट है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वाला तो बाकी आपने देखा ही है फोन में सही होता है ना, लेकिन इन्होंने गूगल डायलॉग दे रखा है। बट अगर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं ना बिना अनाउंसमेंट, वो खुद ही रिकॉर्ड करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो कॉलिंग के टाइम ही अलग से वो सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर रहा है। कोई न्यूज़ नहीं चल रही है। I'm watching some YouTube. Seven 82838. I'm sharing my OTP live. Okay, don't copy. Please don't copy. 782838. ये थोड़ा अलग था, गूगल कॉल रिकॉर्डिंग में बाईपास हो गया बिना अपना डायलॉग दिए। तो अपने यूआई में डे टू डे में कुछ फीचर जो यूज करते हो दे रखे हैं। इनफैक्ट ये नेटवर्क स्पीड वगैरह भी ऑप्शन है और फोन के अंदर 120 हर्ट्ज काम तो कर रहा है, स्मूथ फील कराता है। हाँ कहीं कहीं अभी लगता है कि थोड़ा थोड़ा कई बार क्या होता है सेटिंग पेज ओपन है थोड़ा सा वहाँ पे 60 हर्ट्ज आ जाता है, कई बार थोड़ा स्लो हो जाता है, कहीं कहीं फोन में लैग देखने को मिलेगा। कैमरा एप्लीकेशन थोड़ा स्लो लगा मुझे, ये मतलब थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, थोड़ा स्लो फील कराता है। हैंग हो गया जैसे ये कैमरा पे मैंने फोटो क्लिक करी तो ये कई बार थोड़ा सा पहली बार आया तो ये जो मार्केट में थोड़ा सा फीडबैक वगैरह मिलता है ना, तो जैसे मैंने ये कैमरा एप्लीकेशन यूके में फुटबॉल देखते हो क्या भाई? आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल. मतलब आई डोंट फॉलो लाइक हर एक प्लेयर का नाम पता हो एंड थिंग्स लाइक दैट, नो. बट आई रिसेंटली मतलब started watching, bought Sony Live subscription and watching matches here and there. Saw some UTC final. Then I got to know that Liverpool won after so long. They did the parade just like RCB, right? So, yep, I'm like slowly learning about football. It's not my primary sport, so yeah, learning about it. In stadium, no, not yet. Oh my God, buying tickets of football match is so difficult, man. It's so difficult. So difficult. ये सब ओपन करेंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट में चलेंगे। पोर्ट्रेट कैमरा जो है बहुत लगी है। अगर मैं फोटो क्लिक करता हूँ नॉर्मली ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा होल्ड टाइम भी दे रहा हूँ, उसके बाद हल्का सा क्लिक करते काम करते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक हुआ और ये प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। उसके बाद मतलब यहाँ पे लाइट कंडीशन अच्छी है, देख के लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग 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 बस कर भाई। पनवेल वाली बात याद आ गई मुझे कई बार। अब इनवाइट नहीं होगा क्योंकि जब तक प्रोसेसिंग चलती है फोन रुक जाएगा, तो ये करता है कई बार दिक्कत। फोन कहीं कहीं लगी लगेगा, जैसे यहाँ पे देखो आप एप्लीकेशन में क्लियर 20 years since Liverpool follower. 20 years? Oh, looks like I have spotted a big football fan. Hello, Diviksha. Hi, how are you? How was your day? Welcome back to my stream. चला था ओरिजिनल एप्लीकेशन क्लियर कोई नहीं, जब रैंडम यूज कर रहा हूँ, बट फिर कभी ऐसे यूज करूंगा तो लगता है फोन बढ़िया चल रहा है। इनको ऑप्टिमाइज करना होगा वाला टाइम को। Just tired preparing for G. G or G advance? Are you preparing for mains or advance? तो कैमरे का क्या हाल है यहाँ पर? एक कैमरा यहाँ पे 64 मेगापिक्सल है सोनी सेंसर के साथ, बाकी एक मैक्रो है, एक आपका डेप्थ है और सेल्फी यहाँ पे 13 मेगापिक्सल की है। मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए अलग अलग, देख सकते हो आप, थोड़ा इंडोर है, लो लाइट में क्लिक किया था। एक्चुअली फोटोज डे लाइट में अगर लाइट अच्छी है तो ठीक आ जाती है। 1x मोड है बेसिकली 2x भी करता है ये, सेम टाइम डायनेमिक रेंज वगैरह इतना अच्छा बैलेंस नहीं कर पाता, जो कि 10,000 के आसपास है उससे नीचे के फोन में कॉमन है देखना। वैसे इसमें भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे 2K वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी है, इतनी सैचुरेटेड टी-शर्ट आ रही है मुझे रेड कलर, सामने से लाइट आ रही है जो कि अच्छी खासी नॉर्मल लाइट कंडीशन में आ गया तो कुछ ऐसी सी है। तो पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में हम लोग इस ब्रांड पे बात करेंगे। इसका एक और फोन आने वाला था, अगर वो आ जाए तो क्या सोचना है आपको, सब कुछ बात करेंगे। Both, I guess. Oh, okay, nice. Are you in TCS? Nope. आपको सवाल जो हमारे मन में आते हैं, पहला क्यों मैंने कहा ये एसर का ब्रांड है, इस पे लिखा हुआ है, देखो फोन के पीछे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये एसर का टेक्निकली नहीं है। एसर की वेबसाइट पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में एक वेबसाइट है acermobiles.in, उन्हीं की वेबसाइट पे दिखता है। अभी एक ही फोन दिखता है और कुछ नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात, ये फोन लॉन्च हुआ है इंडिगल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूब पे इनका चैनल है, वहीं पे लॉन्च किया गया था। और ये कमेंट करके कौन आया था गैस पे लॉन्च करना चाहिए था। नहीं भाई, यहाँ सही है दोस्तों, यहाँ आजादी है बोलने की, वहाँ कहाँ बोल पाऊंगा। इनकी वेबसाइट पे एसर नाम से लिस्टेड नहीं है, यहाँ पे कुछ फ्रिज वॉशिंग मशीन इस तरह की फोटोज है और कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं वेबसाइट पे। तो मैंने चैट जीपीटी किया, उसके हिसाब से ये 2018 में कोई कंपनी है, ये क्या करती है, लाइसेंस ट्रेडमार्क लेती है, अलग अलग ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करती है और फिर प्रोडक्ट को मार्केट करती है अंडर देयर नेम्स,
जिस ब्रांड का जैसे एसर के साथ किया हुआ है, उसी के साथ ये जो बना है फोन को मैन्युफैक्चर किया गया, देखा है तो मेड इन इंडिया, बेसिकली असेंबली होती है, लेकिन आप ये देखो मैन्युफैक्चर एट पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो आप समझ होंगे कि क्यों ये एसर का होके भी एसर का फोन नहीं है डायरेक्टली, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आता है भाई व्हाट अबाउट सर्विस, क्योंकि ये फोन जब आपके सामने आएगा सर्विस एक जरूरी मुद्दा हो जाता है। तो हमें एक्जेक्टली इनका रीजन नहीं पता कि लॉन्च पहले होने वाले थे, फिर डिले किया गया, फिर जिस दिन लॉन्च होने वाले थे फोन डिले किया गया, फिर 2 मॉडल आने वाले थे, फिर एक आया है और अमेज़न पे मिलेगा ये। लेकिन मैंने फिर भी बात किया इस पे, कस्टमर का नंबर दे रखा दोस्त पे, तो उनका कहना ये है एक्चुअली उनको पता ही नहीं था, कह रहे हम सर्विस देंगे आपको, हमारे पास ही कॉल करना पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं पता एक्जेक्टली क्या प्रोसेस है। ऐसा लग रहा है जैसे टीम को बताया ही नहीं गया कि फोन वाले डिपार्टमेंट के लिए क्या बताना है, क्या बात करनी है, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। मैंने उनको पूरा टाइम लिया, काफी देर तक होल्ड रखा, बीच में फिर होल्ड रखा, फिर बात हो रही थी, एग्जैक्ट जवाब निकला नहीं। मैंने कहा सर्विस सेंटर बता दो, आप मैं लखनऊ में रहता हूँ, एटलीस्ट लखनऊ में तो सर्विस सेंटर होगा, कहीं तो डील करोगे ना, कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई तो पता नहीं जाऊंगा मैं, क्रैक हो गया मान लो, मुझसे गिर गया, तो वो कह रहे लखनऊ में सर्विसिंग है, हम मंडे को कॉल करेंगे। तो हमने ईमेल भी किया कि भाई लखनऊ वगैरह में सर्विस सेंटर है क्या, इन्हीं के ऑफिशियल ईमेल से, तो वहां से रिप्लाई आता है कि लखनऊ में हमारे पास कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है, नोएडा में है, और नोएडा में तो ये बन रहा है, बाकी जगह सर्विस का कुछ डिटेल नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है सर्विस के बारे में। कि आपने फोन खरीद लिया, कल को मान लेते हैं कि भाई हम फोन करेंगे, फोन के बाद उनका कस्टमर आएगा या फिर आपको पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज करेंगे, कब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, टीम को पता ही नहीं है कुछ। अब यहीं पे सवाल का जवाब आता लेना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, फ्रिज बनाना, टीवी बनाना, एसी बनाना, How are you, bro? I'm okay, not too bad. How are you, Asim bhai? कंपेयर टू स्मार्टफोन बनाने का मतलब लाइसेंस लेके रेडी करके बेचना, क्योंकि इनको सर्विस देना भी थोड़ा आसान होता है। स्मार्टफोन एक अलग है, सॉफ्टवेयर टाइमली क्या अपडेट आ रहे, लोगों के इश्यूज क्या है, फोन है गिर गया, डिस्प्ले टूट गई, मल्टीपल चीजें अलग बिहेव करता है। विजन क्या है स्मार्टफोन का, ऐसा ना हो कि आप एक दो कॉल लॉन्च करके गायब हो जाओ। आप डिटेल में कुछ वेबसाइट पर नहीं बता रहे हो, ओपनली कहीं से बताया नहीं जा रहा है, कुछ चीजें आपके क्लियर नहीं है, लॉन्च इवेंट भी इतना How प्रॉपर was your day? लॉन्च करके Oh, तो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए इसको बाय करने से, बिकॉज सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के टाइम में। अब सर्विस की जरूरत पड़ सकती है। ऑनर भी आया था, ऑनर ऑफिशियली नहीं आया था, ऑनर को लाया गया था, आज सर्विस नहीं दे पाती, तो थोड़ा सा ये किस महामानव की वॉइस है बैकग्राउंड का? I'm watching YouTube, man. Okay, now I will watch something really क्या बोलते हैं उसको, crazy. Okay, I'm going to watch Vijay Malia's podcast. Let's see. You were the biggest airline in the country. India's biggest airline. What went wrong? I just saw it. You finished 4 hour long podcast already? What time? It's 8:22 here. Okay, and he uploaded like 3 hours ago. Wow, man, you watched in 2x, right? Then Finance Ministry of India, I had to downsize the salary. I was told not to downsize people all the time. You continue, banks will support you. That is how it all started. Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. Kingfisher Airlines has been struggling. At the time when you asked loan, the company was not doing that great. Please never forget, I gave my personal guarantee. So all this narrative, Joe कभी अपना personal guarantee देता है. People give you this kind of loan against collateral. They took shares of Kingfisher Airlines at the time. No, not full. Oh, just you saw the thumbnail. Okay, I'm watching it now. So I'm just simply scrolling YouTube. Okay, randomly watching. I am a bit tired today. I stream every single day. If you have seen my previous stream or something, you'll find me very energetic. But I'm a bit tired today, and if you see my title, I'm going to start a running challenge from tomorrow. So I'm preparing myself for that. So I'm a bit relaxed, not doing any physical activity, because tomorrow I'll wake up early, run for 30 minutes, and stream at the same time. Let's see. I mean, it is going to be tough to stream when I'm running because I cannot record anything, like, and I'll be on mobile data. I can't carry Wi-Fi and run, right? That's not possible. So yeah, it's going to be tough, but it is what it is. I have to improve my running capabilities. So yes, definitely worth the shot. Double price. There's again a statement that your international employees will pay. Indian employees will not. A company in India had no money. The podcaster had cracked the code. I have mixed opinions, okay? I have mixed opinions. Podcast can help you, like, to the point where you have the information briefly, but at the same time, you have wasted time. And let's say I am a podcaster, okay? I am taking podcast. Actually, the channel is not because of me. The channel is because of the guests who are coming in my channel. Okay, it's not me.
I'm not showing my personality. I'm asking questions which Janta wants to know, right? Audience wants to know. It's not something like showing your perspective, your opinion about things. You just start up some conversation, you say da 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 da, da, and then you ask other person, he will reply. It's good way for the media to do such things. It helps, for interview uh session, you know, it helps. This is a good format. You just need two mics, a camera, and hit record. He's doing genuinely, others are doing ghost series. Yeah, I mean, I don't have any personal favorites as such, but this is my opinion. Like, until and unless it's extremely important for the work you are doing or for the interest of your brain, don't click it. Okay, because you're feeding your brain which they want you to put in your brain. Okay, if you're not doing a proper research on something, then you're just wasting your time, because people can say anything. They will come up with some data, some research data. They can say, oh, the sample size was 1,000 people, I did something. Okay, they put it on YouTube, and people will believe. They will cut the shorts and clips, and they will go viral, and they'll start believing all these things. But if you go dig deeper, you realize the reality is different. It's not always trustworthy. Whatever they are stating, they are. I mean, I can't believe 100%. Look what happened to bare biceps. Yeah, I know. It's not about bare biceps or Raj or any podcaster for that matter. My idea is like, is this content worth my time? That's my idea. Okay, if this content is worth my time, then only I should click on it. Okay, if I have other things to achieve, I shouldn't be wasting my time on this. Okay, because they will feed your brain, and they'll feed with the data which is not important, which are not correct maybe. Okay, facts you need to go and check. You have to manually search the research paper and whatever websites, articles. Sometimes those articles are paid, so you can't really check it until unless you buy some subscription. Okay, so these are very very specific knowledge areas which you can explore, but you should just listen to those podcasts as the source of entertainment and not um knowledge session. That's what I'm trying to convey actually. UB's money of 260 crores put the bank under the control of the company. Court said no. Multiple international courts, Switzerland authorities, one of the courts from UK, they also found you guilty for misrepresentation of funds. Do you ever feel sorry that you couldn't do anything? I apologize publicly to everyone for this video. Here's what pissed people. Oh, I was telling he is ruling the podcast scene. Yeah, probably in terms of growth, views, subscribers, and things like that. Probably, yeah. That in your private life you enjoyed. You had a grand birthday party, your 60th birthday party. Do you think you shouldn't have done that party? Why? Somebody mentioned that you took out 35 million euros and invested in buying properties in France. What happened between 2012 and 2015? I made 4 settlement offers to the banks, which they refused to accept. 2015, CBI started investigating. They found you siphoning the money. 3rd March 2016, case needs to be heard and needs to be represented in front of the Supreme Court. 2nd March, you left. On 15th April, your suspension came for your passport, and 24th April was a revocation. Why did you reply? I'd like to show you something. Here is. What is the biggest challenge of doing business in India? It's in the Indian DNA. But how did you manage that before? Would there ever be exchange under the table as well? I'm not going to confirm or deny that because I leave it to your imagination. How do you make money now? Do you feel restricted now? What's your biggest fear now? Trying to prepare for the world? Have you ever imagined yourself actually going to jail? Would you be willing to return to the country if you're assured fair time? If I'm assured, absolutely. I will think about it seriously. But this episode is not about glorifying a fugitive, nor it is about justifying any wrongs.
It's about asking the hard questions to the man at the center of one of India's most controversial financial stories. After 9 years of complete media silence, Vijay Mallya chose our podcast Figuring Out to speak publicly for the first time. I didn't do this podcast to celebrate him. I did it because I was curious. I read his tweets, I heard the headlines, but I never heard the full side of the story. Because the tweets that he makes are different than what the headlines talk about him. There's a mismatch. As a podcaster, my job is to ask every uncomfortable question, and I did. Vijay Mallya claims he never committed fraud. He says he wanted to pay back the loans, that his properties were seized and sold, and that he's being framed. He also says he's ready to face the consequences, whatever they may be, if he's given the fair chance of trial. I've tried to cover his childhood, business building, the man behind the image, the rise, the fall, the good, the bad, and the ugly, the life before and the life now. I'm not here to decide who's right or wrong. I trust the Indian judicial system to do that. This conversation is for those who want to listen, think, and question. It's not about taking sides. It's about understanding all sides. Watch this episode with utmost sincerity and let me know in the comments, what do you think? Welcome on Figuring Out, sir. Thank you for doing this. And my objective of this whole podcast is going to be that I want to know your side of the story. There are so many things that we have heard. There are so many things which are probably right or wrong. I don't know what's going on. And I think apart from me, there are millions of Indians who want to know the same thing. You highly talked about. I also feel that there are so many things which people have just heard and started building their own narrative about you. So I wanted to, out of inquisitiveness, curiosity, and be out of a responsibility, I wanted to take this forward. So thank you so much for doing this, and thank you for giving us an opportunity. And the best thing which I really like about this is when you came here and you said, I'm ready to answer everything which you want to talk about. I don't think many people get that opportunity. So thank you for doing this. But the first question is, why are you doing this after 9 years? There are thousands of people who must have reached out to you over the years. Why all of a sudden the need after 9 years that, okay, I'll say yes. And yes to us, why? Very good question. Nice place to start. For the last 9 years, I have been the subject of a vicious, relentless trial by media in India, who, as you rightly pointed out, have created so many narratives, negative narratives about me, that I have become a lightning rod of public anger, being abused, called names. And that was very unfortunate, both professionally and personally. So rather than try and take on this huge Indian media machine, I just prefer to keep quiet. Now, times have changed. And I can't help but recalling that when President Trump was inaugurated, in the first press briefing by the White House press secretary, she said that a few seats were now going to be reserved for the very first time for people who represented new media or social media. I didn't even know that a podcast existed, let alone understanding what a podcast really meant. Hello, welcome. I won't say your name. Welcome. How are you feeling? How is your leg? What are you watching? I'm watching Vijay Mallya's podcast out of curiosity. Until you told me and explained it to me in a manner that I got quite excited about, because here is my opportunity to not only answer your questions, but to say things that I truly feel would never, ever have been truthfully reported by the legacy media, particularly in India. That's why I'm here. Why do you think nobody cared about hearing you? In India, it's Hi, strange. I have done surgery today. It was so much pain, unimaginable, but I'm okay now. Oh my God, sorry. How are you? I mean, is your surgery successful? How are you coping up with the pain now? Is it okay? But public opinion is very quickly formed and influenced by the media, more importantly by sensationalism. I still remember the anchor of one media channel So I can play after 2 to 1 weeks. Yes, it's not paining now. That's great. That's great. Good to know, man. I'm happy for you. You will finally play. Okay, sorry. I'll just watch. I think I'm disturbing you. No, no, no. I'm streaming, man. For me, streaming is more important than watching anything. And you're not disturbing me, okay? I will just, watch in the background, okay? 2016, shouting and screaming on the television, saying, Vijay Mallya, I want to see you in jail clothes. I want to see you eat jail food, with an image of me. Yeah. In jail attire. What for? I always wondered what for.
subsequently chor, paisa loot You're ke watching bhag on 2x. Yes. So, yeah. If you want, I can reduce it. You want me to? Okay, I'll do 1.5x for you. kya paisa, kya loot. Nobody bothered to step back and think. But it was very easy to fling false accusations day after day. I can see the reflection blurrily on your spectacles. Yeah, I know. And get away with it. One of the reasons I agreed to sit with you today is also because it is only very recently that finally the government of India, Ministry of Finance, has published a report, their annual report, in which they have acknowledged 14,100 crores recovered from me. Of course, this was following the finance minister's statement in Parliament. And the legacy media can't argue with that anymore. They can't put any spin on it anymore. The Debt Recovery Tribunal gave a judgment debt of 4,999 crores. No, it's okay. I also see all type videos, even studies or internet videos on 2x. Okay. Again, back to 2x now. My brain can't handle the pauses, in between they will have pauses, right, when they are speaking. So my brain can't handle the pauses. It's time waste for my brain. So that's the reason I watch on 2x, so the pauses are gone. It's just super fast. And I would love to see 3x, 4x if YouTube is allowing. Crores borrowed by Kingfisher Airlines, not by Vijay Mallya. Borrowed by Kingfisher Airlines, of which Vijay Mallya was one of the guarantors. So what is the DRT judgment debt? 4,999 crores plus 1,203 crores unapplied interest. Okay, which means notional interest that the banks had not even booked. Forget that. The total of the unapplied interest and the principal was 6,203 crores. Okay, and I was a guarantor. The government has recovered 14,100 crores from me. Right now, if I had done chori, if I had duped the banks, where does this all add up? Till very recently, there was absolutely no official figure of recovery. Right? So everybody, the legacy media in particular, wrote whatever they wanted. Right? And I was in no position to contradict. Today, after the government of India has acknowledged the recovery of 14,100 crores, I think it's my turn to ask them what they have to say about it. Because you say that a lot of things about you are false narratives. Narendra Modi, I was just randomly swinging my finger on keyboard and this first word came. Network 2NS word. Okay. 2NS word. Interesting. G third word. Okay. Are you preparing for G? Let's go down to from your childhood. We speak from the beginning, and you tell me everything that people have been said, people think is wrong, and I'll try to present the facts and the narratives which I have heard and which I've gathered through my research. And if you're okay with counter somewhere, I'll counter you as well. No, please feel free to counter me. If there's something that you feel is debatable or you want to make a counterpoint, I'm ready for it. Perfect, because I feel that's my little responsibility out there to hear the right side and the wrong side both, and let then people think about it and let them make the right call. That's right. Perfect. So, before you even ask about childhood, do you regret anything? I regret one thing, which is that after all my hard work, all the value that I created in so many multiple ways, that effectively the government of India and of course the media made me a zero from a hero. And that's a fact of life that I have had to stomach and live with. Now, whether that was justified or not is something that I'm sure will be encompassed in your own questions. Zero from a hero. Let's talk about building of a hero first, and we'll come down to zero again. So before the billionaire Vijay Mallya, before the controversy, before all of this flamboyance and scandals and things that people talk about, who was Vijay Mallya as a child? Where were you born? What did you do? How was your childhood? Tell me about it. Born in Calcutta, moved to our hometown Bangalore, went back to Calcutta, did my schooling there, did my college education there in Calcutta. And my upbringing, and my father was a very normal, I would say strict upbringing. Really? Yes. Tell me Nations League semi-final 2 today, Spain versus France. Can you just for a sec check the score on Google, because I'm writing and split screening? Yeah, sure. Can you tell me the score right now between Spain versus France? Currently, Spain is leading France 2-0 in the first half. See? 2-0. Spain is leading. incident strict childhood. Two things. When I was still in school, class 9 at La Martiniere in Calcutta,
OMG grind, thank you. You also accept all the requests. Not everything, okay? Under YouTube community guidelines, okay? OMG 20, yeah. My marks were not very good in class. I was mid-ranker, only because I took a lot of interest in sport and extracurricular activities. I didn't concentrate fully on studies and my mark sheets. And he told me, and I think most people know it, he was exceptionally intelligent, was a product of the Doon School, and he topped his class. So he expected me to also top my class. Nevertheless, he said something to me which I think I remember till today. Two things made a profound impact. One, if you're not good enough, you are not going to step into my shoes. And the second thing he said, do you realize that while I say step into my shoes, there may not be any shoes at all, because the government and its then socialist policies may have taken everything away from us. And the only thing I can leave to you is your education. So take it seriously. I think I repaid some amount of faith because for my last 3 years in school, 9 to 11, I think I came within the top 3 in class, and he was quite happy about that. So why do you live spoiled as child? Spoiled? Oh my God, I was anything but spoiled. Really? You had all the fancy toys, you had all the things that you used to- Absolutely no fancy toys at all. That's completely false narrative. After I passed out of school, and when I went to St. Xavier's College to study BCom, my father was very clear. You go to college at 6 o'clock in the morning, and when you finish at 10:30, you go and work a full day at the office as a management trainee. I was put on a stipend of 400 rupees a month, and that 400 rupees never increased right the way my time through college. So that's all I got, 400 rupees a month, and was working, in those days, Phipson and Company Limited, Old Courthouse Street in Calcutta, every day after college. Aren't the stories that you used to go to college in a very fancy car and you remove the silencer just to show the noise of your car, the loudness of your car, and you would always show off, weren't you? I was no show off at all, and the fancy car that I have was a second-hand Standard Herald. So where are these stories coming from? I don't know, people's narratives, people's perceptions. That's why it's important to correct those perceptions. Talking about noise, even a fatfatiya in Delhi makes a hell of a lot of noise. You don't have to drive a fancy car to make a noise down the street. So you are telling me that all these stories of you having fancy toys, remote control cars, and then fancy cars with loud noise, all of this is false. Well, I may have tampered with the silencer of my car, because I was always into kind of fast cars, loved motor racing and stuff like that. But it still remained a Standard Herald. This match will probably decide that balloon or winner its prize for the best player in a particular period of time. Top 2 contenders are Lamine Yamal, 17 years old, and Ousmane Dembele, probably in his 30s. Okay. Interesting information. Where can I watch all this? I need to follow on Sony Live, right? Loud 808S is also live. He does live exactly at my time, yeah. My schedule time and his schedule time are same. You pronounced everything right, just except the balloon door. Wait, I will learn. What is BALLONDOR? The Ballon d'Or, French for Golden Ball, is widely considered the most prestigious individual award in football, soccer. Oh, It is the presented Ballon annually to the male d'Or. player. The Ballon d'Or. I don't know, Sony Sports, I think. Yeah, I'll buy Sony Live. Okay, I'll buy Sony Live. But why did you do that? Like just to show off? Like No. noise? Look, if you can modify the silencer of a car, like you can modify the top end of your car's engine to make it go a little quicker. That's the basics of motorsport. But how are you as a personality? Like, were you confident? Were you really arrogant? This is all a question of perception. Arrogance is also your understanding of arrogance, my understanding of arrogance. But I'll tell you one thing. I was always self-confident, and whenever I was invited to give talks at various universities and educational establishments, I always told the youngsters that when they start off life, they must be self-confidence, because it is only self-confidence that will bring out the best in you. And I still believe that till today. And because I started young, I am passionate about youth empowerment. But this would have not been the case always. As a kid, Whole company probably tell to Michael and Josh that you're buying full Sony Live.
Full Sony Live? No, I'm not buying a company, okay? I'm just going to buy subscription to watch the football. We all have like a lot of insecurities. It's not always confidence. What was your biggest insecurity when you were growing up? I don't. Yeah, probably the biggest insecurity was when the examination results were due, and what my dad would have to say about it. But no, beyond that, my life is pretty plain and simple. Great bunch of school friends, great bunch of college buddies in Calcutta, not the glitzy lights of Bombay. And yeah, so it was pretty normal, but nothing fancy. But I had a very strict set of supervisors at work who were clearly instructed by my father to be tough with me, to make sure I work my butt off. And I'm none the happier for it. That's what made me. But did you ever get to a position or in a thinking as a child that one day I'll be powerful, one day I'll be very rich? No, absolutely not. I mean, how could I be so presumptuous? Here I had a dad who If you own it, you don't need a subscription. So my advice is probably go with your Hudson. Oh my god. Let's ask. Okay. Let's ask our what is Sony Live's revenue? Sony LV's revenue is primarily reported as part of its parent company, Culvermax Entertainment Private Limited, formerly Sony Pictures Networks India, SPNI. Here's a breakdown of the latest available information. FY24. Fiscal year ending March 31st, 2024. Culvermax Entertainment reported a revenue from operations of 6,510.66 crore rupees, approximately $812 million as of March 31st, 2024. This was a 2.6% decline from the previous year. While this figure represents the overall revenue for Culvermax Entertainment, which includes its 26 television channels, Sony LIV is a significant part of its digital operations. Notably, subscription income for Culvermax Entertainment was up Okay. 7. If I want to buy Sony network, how much it would cost? Sony offers various network services, and the cost will depend on which specific service you're interested in. Here are the main ones and their typical costs. 1. If I want to buy Sony Network India Limited company, how much it would cost? Sony Pictures Networks India, SPNI, is a private company and a wholly owned subsidiary of Sony Group Corporation. This means you cannot directly buy shares of Sony Pictures Networks India Limited on a stock exchange like you would with a publicly traded company. If you are interested in investing in the parent company, Sony Group Corporation, Sony, which is listed on the New York Stock Exchange, NYSE, and the Tokyo Stock Exchange, you can purchase their shares through a brokerage account. As of June 5th, 2025, Sony Group Corporation has a market capitalization. It's $161 billion. Sony's net worth. Okay, and in India it is 6,000 crores. Oh, Shiv, we deleted the message. What did you? Oh, okay, I have got your message. Thank you so much, wishing me success. I wish you the same. God bless you, Shiv. Do well in your life. I hope you had a very good day. Absolutely disgraceful, and I have no words about yesterday's tragic incident. I think I've reacted on that yesterday itself, but yeah, I feel very bad. I mean, I don't want to blame anyone. I just feel really, really bad for the people who lost their lives and their families. That's all. No blame game, no politics, nothing. It's simple. I mean, there was a techie who lost his life. He mentioned, I'm going on a short break. There was this small child who lost his life. It's just miserable. It's just so bad. So bad. Oh, okay. It's taking a drop of water from sea. You can buy Sony and nothing will even happen to your money. Oh, really? Yeah. I'm super rich, no?
I need your blessings to become that rich. Probably Mr. Beast can think of buying something like that. I don't blame police, I blame the people itself. The obsession towards celebrities and sports stars are ridiculous. I mean, it's okay to have obsession, but it's not okay to, understand the risk of going in a place where, I can show you one thing. Let's compare the situation, okay? Tell me one thing. How many people died during Liverpool parade? Thankfully, no deaths were reported during the recent Liverpool parade incident, where a car drove into a crowd. While a significant number of people were injured, reports indicate up to 109 casualties, with some requiring hospital treatment, there have been no fatalities. Tell me how many people were appeared in Liverpool parade? Estimates for the recent Liverpool victory parade, celebrating their 2024-25 Premier League win, indicate that around 1 million people were in attendance. Some reports suggest the number was even well in excess of 1 million, with some fans... 1 million people came in Liverpool parade. 1 million people. And no deaths. No deaths. Okay, you already read. Sorry, no problem. No, he can't. His business was going to be buy by someone in $10 billion everything of his, but he denied, and it's probably within 8 billion now. A 55-year-old man crashed into some people. Later, he was arrested. Yeah, I know. That's the only incident that happened during the Liverpool parade. But look at RCB parade. Okay, I don't want to react on okay this that it happened, but I feel bad for people who lost their lives. I feel bad for their families, their only member, their the only son. Okay, only son. That's the difference between civic sense and non-civics. It's a problem. It's a country level problem. Okay, people are not educated. They never learned civic sense. It's not taught in your schools. Okay, and people come from different places and they just want to, okay, there is one big role of social media also, because they just want to post somewhere, and because of that they do all the crazy things and they break all the rules. Okay, yeah, I mean, it's okay to be obsessed with something, it's fine. I'm obsessed with internet, but there is no internet parade. Okay, internet is live every day, but my point is it's okay to be obsessed, but to a level you need to understand this is right, this is wrong. And also, like, there should be some, like, they won day before yesterday and parade was in like within a day. Like, they didn't knew that, they were not aware that these guys are winning. They got to know late night, 12 o'clock. Okay, finally RCB has won the game. Okay, and the same next day, within 24 hours, there is a parade. At least you should have given some time, arrangements, things like that. I don't know. I don't know whom to blame. I'm not blaming anyone. For RCB, it was expected as 1 lakh people will come, but 4 lakh people came except the unexpected. The capacity of the stadium is 35,000 if I'm not wrong. Let me ask. What's the capacity of Chinnaswamy Stadium? The
Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, India, has a seating capacity of around 35,000 to Yeah, I told you, 40,000. right? 35,000. Anyways, it's so sad. Yeah, I feel so bad, you know. I feel people lose. Okay, what I want to say is there is a value of life. Okay, but in India, because we have so many people, the value of life is extremely low, almost tends to zero. That's so bad, you know, so goddamn bad. Like in that incident also, Kashmir incident, right? There also the value of people, like what's the value? You are losing people. Okay, it doesn't matter if it's 1 or 11 or 11,000. People are people. Value of life should be there in any country. Okay. When are you getting planned to be married? I am not. I will be married, or maybe I'm married. I'm not thinking about it. Please invite to your wedding. We will definitely come. They should have stopped the speech. See, that also is a tragic thing because it's not easy to judge that people are dying outside when you're already inside in front of super loud people. Okay, it's not easy to judge. Okay, so I don't know what's the story behind. I was not there. Okay, and whatever conspiracy is going on internet, we can't rely on that. Okay, nobody would, like, I assume nobody would ever continue speech if they are aware that somebody is dying outside. 11 people died outside. That number came after some time. I feel. Okay, nobody knows anything, but the reality is the person who left for watching RCB's victory session or whatever we call it, he has not come back to his house. His dead body is still not given to that person. Okay, that is the reality, and that is the sad part. Internet Parade Grind Machine. Mr. Beast's latest video, we launch parade for 1 million people and the money doubles, every person joins and the last one to join takes all. Even I was not there, but one thing is definitely true, that people of our country should open their minds and brains. Yeah, probably. I mean, if I talk about India before 10 years, that I definitely feel like Indian people have some improvement in terms of their behavior. Okay, if I go back to like 2015, things were different, but now they have some opinions on behavior. If something is going bad, it's out of control, they take out the camera, put it on social media, and then things go from there. People tag police, things like that. It's improving, but there is a downside as well. Like, people are, I see, like, everybody is chasing this social media fame and this cheap thrills which you get online. It's not cool. Okay, it's not cool, and the obsession of becoming big is getting crazy. Okay, like, I don't know, if I would given an option to follow a good army man, a good fit army man, and his daily routine versus a cricketer, I'll probably follow army man. But they are not heroes, they are unsung heroes. NVM, everyone was after players grind. I gotta go now because I have to get up at 5:30 a.m. I have to wake up early. I have to wake up early as well for running challenge. Stay tuned, I will stream early tomorrow. You don't have viewers because iShowSpeed is live. Oh, he's my competition. You are right. Gen Z thinks everything is cool. Yeah. Gen Alpha too. I like watching
more than anyone, but not more than you. Oh my God. You have my heart. Okay. Thank you so much. Yeah, this is my personal opinion. Okay. I mean, see, you need to understand the reality, and you need to be like little aware. I mean, see, Gen Z, how old are they? 23, 24, 25. They haven't seen the next few years of life, okay? And they haven't seen the previous few years of life. You know, when probably they were not there when 99 happened. They were not there when 2002, 2003 happened, probably. I'm just guessing, okay? So all these things are very, very, you know, it's global problem. It's not like single human problem or thought process problem. It's a global problem. So you need to understand, whenever this 9/11, 26/11 happened, they were very, very small. They were not even understanding what's going on. Okay. So loss of life, you need to thoroughly understand that it's not cool. It's not good. Okay. And all the politics, okay, that will happen. For everything happen in India as a country, in any country for that matter, any country, wherever any incident is happening, there will be politics around it for sure, because that's the opportunity for parties to gain voters or gain some momentum or something. This will happen every single time. But our responsibility is to think think what is right, what is wrong, and think just outside of the obsession, outside of the social media things. Just think from your open mind, and then you'll realize, okay. And for thinking also, for improving your thinking also, you need to have a good experience with life. Yes, it's global problem, but the thing is that is easy enough to fool people nowadays, give them entertainment, and that will distract them from the real issue in the country. I agree. I totally agree with you. I totally agree with you. Yeah, we can debate about it. Grind. Bye. I gotta go now. I also have to sleep. Bye bye. Okay, I'm also going, guys. Thank you so much. Homelander, it was nice discussing this topic with you. We'll continue. Okay, tomorrow. Please join and let's discuss again. It's always good to discuss things, like if we discuss and somebody is watching sometime in future, probably they have their own opinion. Bye bye. Thank you. Take care. Thank you so much for watching. Keep grinding, keep smiling. Jai Shri Krishna, and I will see you tomorrow.